Hi everyone, my name is Ruchan and I welcome you to YourPedia Education. Today, as you know, daily we are having a session on this 5 most important questions. We do for civil engineering also and we do for environmental sciences also. And I tried to enlighten you about the ONGC. ओके कि ओएनजीसी में अगर आपका रैंक या स्कोर कम भी है ना तो आप एनवायरमेंटल साइंसेस से एंटर कर सकते हो और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा एंड दे वर लाइक कि हमें तो ये पता ही नहीं है ओके सो दिस शुड नॉट हैपन you should be actually aware of what are the other stuffs which are going on currently. Okay, anyway, so let us go ahead. We'll be solving questions for environmental sciences for GATE 2022. Okay, now there is a slight bit of confusion among the students ki GATE 2022 क्या postpone होगा या नहीं होगा. So for that there is a very simple answer. Whether it gets postponed or not, your duty is to study. Okay, अगर postpone होता है तो देखा जाएगा, नहीं हुआ तो okay. So at least you should not think that the game will actually postpone and we can delay our study. ऐसा नहीं, आपको आपकी पढ़ाई करके रखनी है. Okay, this is at your part. So you should do that. Okay, so before that, let me just give you a very brief introduction about myself. This is something about myself. I have post-graduated from IIT Kanpur in the Department of Civil Engineering. Plus, I have also secured an All India rank of 165 in GATE exam. And till date, I have mentored more than 25,000 students for this GATE and engineering services. And I have also served as project engineer in Mumbai Railways. So this is a brief introduction about myself. This 10,000 is very old data. Okay, so let's move ahead with our questions for this GATE 2022. Okay, so let me just make it dark so that you'll be able to see. Okay, now it should be visible. Okay, so this is the question. I hope everyone is visible. Everyone can see that. हमें क्या दिया है? The first question is from environmental chemistry. It is from environmental chemistry. क्या बोल रहा है ये? HCO3 minus is a species which can act both as an acid and a base. Such species are called what? Such species are called what? जो कि दोनों एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह पर भी बिहेव कर सकता है. These are called, any idea? A, B, C, D. Which of the following can we answer? Amphoteric. Yes, very good, correct. Correct answer here is amphoteric. So those species which can either act as an acid, acids are those which liberates or donates H plus, and base is the one which accepts H plus. Okay, such species are called amphoteric species. Amphoteric. अब यहाँ पे जैसे देखो HCO3 minus, अगर इसमें H plus ऐड करते हैं तो it will become H2CO3. So here it is acting like a base, and if it loses H plus, it will become CO3 2 minus. So here it is acting like an acid. तो ये आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 1 मार्क का. ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है फॉर दिस गेट एग्जामिनेशन. If you want some other examples of amphoteric, you can have this also. HSO4 minus. Okay, HSO4 minus. This also acts as an amphoteric substance, amphoteric species. ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है. एम्फोटेरिक बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, आपको पता होता है तो दैट्स वेरी गुड. नहीं पता है तो प्लीज नोट डाउन दिस. प्लस योर अदर स्टफ इज टू प्लीज रीड अबाउट व्हाट आर ब्रॉन्स्टेड बेस, व्हाट इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड. इसके बारे में भी पढ़ें, क्योंकि अगर एम्फोटेरिक आ गया है तो हो सकता है कि ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस के बारे में भी आपसे पूछ ले. ओके, तो इसे भी एक बार गो थ्रू कर लें. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग.
Okay, this is the next question. In a first order reaction, the concentration of reactant decreases from 800 mole per decimeter cube to 50 mole per decimeter cube in 2 into 10 to the power 4 seconds. Find the rate constant. Again, a question for 1 mark. 1 mark in this GATE 2022, and this is for environmental chemistry. Environmental chemistry से है ये सवाल. इसको प्लीज ट्राई करें, मुझे आंसर बताएं कितना आंसर आ रहा है आपका. Okay. Now this is a question from first order reaction, and this is from chemical kinetics. Okay, chemical kinetics. अब ये मैंने पूरे के पूरे मॉड्यूल के अंदर बहुत अच्छे से बताया कि what is the formula that we use. Okay, so the formula that we are using is for a first order reaction. T equal to 2.303 upon K log A naught upon A. Okay, 2.303 upon K log A naught upon A. तो यहां पे आप देखोगे T का वैल्यू हमारे पास कितना है 2 into 10 to the power 4, that is equal to 2.303 divided by K. हम लोगों को निकालना है log A naught. A naught is what? A naught is your initial concentration, that is 800, and A is final concentration, that is 50. Okay. Now in this whole equation K is unknown, and I believe कि आप इस equation को solve कर पाएंगे. Should not be a big problem. और K का वैल्यू आपको आना चाहिए. It should come out to be 1.37 into 10 to the power minus 4 second inverse. 1.37 into 10 to the power minus 4 second inverse. ये आपका आंसर for K. अब याद क्या रखना है? For a first order reaction, this expression you need to remember. इस पे क्वेश्चन आ सकता है again for 1 mark in this coming GATE examination. Okay? Clear? All right. Next आ जाते हैं. For a first order reaction, the rate constant is given as, again let me tell you, for this GATE 2022 1 mark question from environmental chemistry. Okay, environmental chemistry से the topic is chemical kinetics. Okay, so there are a lot of questions from other departments also that will still keep coming. For a first order reaction, the rate constant is given as, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, log K. This is equal to 10 minus 1.2 into 10 to the power 4 divided by T, where T is the temperature in Kelvin. Find the temperature at which the half-life of the reaction is 70 minutes. Okay, half-life of the reaction is 70 minutes. यानी कि T half का वैल्यू कितना है? 70 मिनट्स. आपको बताना क्या है? टेम्परेचर का वैल्यू.
You have to tell what is the value of temperature. Okay, please try it out. इसको try करें. Now this is a simple question, but still the only thing remains is formulas. So T half for a first order reaction is given by 0.693 divided by K. Day before yesterday भी हमने इस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे 0.693 डिवाइड बाय K पर रेडियो एक्टिविटी के अंदर. तो यहां से क्या हम लोग K का वैल्यू निकाल सकते हैं. इट्स सिंपल. T half is 70 0.693 डिवाइड बाय K. तो K कितना आ जाएगा 0.693 divided by 70. So if you solve it, you will get 9.9 into 10 to power minus 3 मिनट इनवर्स. अब फाइनली बस क्या करेंगे, अगर मुझे T का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे K की जगह पर ये वैल्यू रख दूंगा एंड आई जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T. दैट्स सिंपल. क्या करेंगे, log 9.9 into 10 to power minus 3. This is equal to 10 minus 1.2 into 10 to power 4 divided by T. ओके, बिल्कुल सिंपल सर. अब यहां से जस्ट आपको सॉल्व करना है. अब जैसे इसे सॉल्व करेंगे आपको जो टेम्परेचर आएगा नियरली इक्वल टू 1000 केल्विन. आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली बट नियरली इक्वल टू कुछ 1000 केल्विन आएगा. टेम्परेचर विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1000 केल्विन. देखो द क्वेश्चंस आर स्ट्रेट टू द पॉइंट. एक एक नंबर के क्वेश्चन है आज. एवरी डे हम लोग 2 नंबर के या थोड़े से टफ क्वेश्चन लाते हैं. टुडे आई हैव कम अप विद अ बिट इजी क्वेश्चंस. ओके, सो दैट द स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी थोड़ा ठीक ठाक भी हुई है उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट अप हो जाए. ओके, चलिए. सो दिस वाज द क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the next question. The ozone concentration expressed in parts per million when its concentration was 0.65 micrograms per meter cube. 0.65 micrograms per meter cube in open atmosphere considering the following data is. मतलब कुल मिला के of ozone equal to dash ppm. हमें ये बताना है कुल मिला के. R का वैल्यू दे रखा है और T का वैल्यू दे रखा है. R और T दे रखा है. ठीक है. अब यहां पे समझने की कोशिश करेंगे. आपको कोई हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे. कंप्लीटली इट इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग कि 0.65 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब को आप पीपीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ध्यान से देखना है यहां पे. 0.65 micrograms of ozone is present in 1 meter cube of air. ठीक है, is present in 1 meter cube of air. यही लिखते हैं. अब देखो यहाँ पे मैं स्लाइटली चेंज करने वाला हूँ. 0.65 माइक्रोग्राम्स को मैं लिख देता हूँ 10 to power minus 6 grams of ozone is present in 1 meter cube of air. ओके, यहां पे क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.65 grams of ozone 10 to power minus 6 नीचे आ जाएगा. कितना बना देगा 10 to power 6 meter cube of air. यानी कि 10 to power 6 meter cube of air में 0.65 grams of ozone 0.65 grams of ozone है. Yes, we'll have that session also. Marathon session भी होगा. It is already planned. आप प्लीज विजिट वेबसाइट ऑफ YourPedia.in. वहां पे आपको मैराथन सेशन वाला लिंक मिल जाएगा कि मैराथन सेशन कब होने वाला है. दैट इज गोइंग टू बी इन फरवरी. लंबा सेशन रहेगा. राइट नाउ जो अभी नियरेस्ट सेशन है दैट इज फॉर सिविल इंजीनियर्स. दैट इज सॉइल मैकेनिक्स ऑन दिस कमिंग मंडे. ठीक है, 0.65 grams of ozone. बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन. ओके, अब मेरा काम क्या है? I just need to convert
0.65 grams of ozone is equal to how many meter cube of ozone? मुझे सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है. So for this weight of a gas को अगर मुझे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, so we use ideal gas equation. So let's use ideal gas equation. This is PV equal to nRT. Pressure is let's say 1, volume is V. N क्या होता है? Mass divided by molar mass. So mass is 0.65 divided by ozone है, तो molecular mass कितना हो गया? 16 into 3 into R कितना है? R हमें दिया है यहाँ पे 82.05. Let me just do it again. Into 10 to the power minus 6. Okay. और टेम्परेचर हमें किस में रखना होता है? टेम्परेचर we have to keep it in Kelvin. Ideal gas equation में हमेशा किस में रहेगा? Kelvin. So this is 29 degrees plus 270. Okay. यहाँ पे जस्ट इसको सॉल्व करते हैं, हमें वॉल्यूम निकल आएगा. So let me just solve this. 0.65 divided by 16 3s are 48 into, if I just solve it, I will get 0.0247, यानी वॉल्यूम हमारे पास में कितना आएगा? 3.35 into 10 to the power minus 4 meter cube. 3.35 into 10 to the power minus 4 meter cube. Okay. अब देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? एक्सप्रेस इन पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में जब करते हैं तब इसको हम लोग क्या करें? क्या इस वॉल्यूम को मैं ऐसा लिख सकता हूं? 3.35 into 10 to the power minus 4, that we multiply it by 100 and divide by 100. तो ये वॉल्यूम मेरे लिए कितना आ जाएगा? 335 into 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब. 335 into 10 to the power minus 6. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 335. गेट के लेवल का क्वेश्चन है. This is a question for level of GATE. It is from air pollution. अगर गेट में आता है तो गेट में एटलीस्ट it is a question which carries 2 marks. ठीक है, 2 मार्क्स ही कैरी करता है ये वाला क्वेश्चन. पाने के काफी चांसेस है. और देखो इसके अंदर हम कोई फॉर्मूले यूज नहीं कर रहे. ओके, वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला. लिटरली जब भी आप पढ़ाई करोगे मेरे साथ में, हम कोई फॉर्मूला ज्यादातर यूज नहीं करते, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो द क्वेश्चन इज a metal piece 1.25 meter by 1.25 meter into 6 mm thick and weighing 90 newtons is placed midway between a 24 mm gap between the two vertical plane surfaces. Okay, the gap is filled with an oil of specific gravity 0.85 and the dynamic viscosity is 3 newton second per meter square. Determine the force required to lift the plate with a constant velocity of 0.15 meter per second. With a constant velocity of 0.15 meters per second. Okay. अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. इतना टफ नहीं है जैसा दिख रहा है. प्रीटी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा है. देखो एक ऐसा एक गैप है और यहां पे देयर इज अ प्लेट. Let me just use
यहाँ पे मैं प्लेट बना रहा हूं, इस प्लेट का जो है वो थिकनेस डिफाइंड है, ओके, और ये अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है, दिस इज द प्लेट, ये प्लेट है, 3D में आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अब इसका ये वाला लेंथ कितना दे रखा है, इट इज गिवन एज 1.25 मीटर, this length is 1.25 meter, okay, and this length is also 1.25 meter. Here this is oil, okay, और यहाँ पर भी क्या है, ऑयल है, इस जगह पर भी there is oil. ओवरऑल गैप कितना बताया हमें यहाँ पे, the gap here is 24 mm. The thickness of this is 6 mm. अगर थिकनेस 6 mm है, क्या हम ये निकाल सकते हैं, ये कितना आएगा, दिस विल बी, एक तो 24 पूरा है, इस 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18, 18 का हाफ हाफ दोनों तरफ डिवाइडेड, यानी ये थिकनेस कितनी है, 9 mm, ओके, एंड दिस इज आल्सो 9 mm, ओके। यस, ड्रैग फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। अब यहां से इसको हम ऊपर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.15 मीटर पर सेकेंड, ओके, अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं 0.15 मीटर पर सेकेंड, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका सेल्फ वेट विच इज एक्चुअली 90 न्यूटन प्लस साथ में अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे क्या लगेगा, ड्रैग फोर्स, ओके, नीचे की तरफ क्या लगेगा, ड्रैग फोर्स लगने वाला है दोनों तरफ से। अब इसको हमें ऊपर की तरफ मूव करना है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि ऊपर की तरफ फोर्स रिक्वायर्ड कितना है, फोर्स रिक्वायर्ड कितना है, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे द फोर्स रिक्वायर्ड इज बेसिकली इक्वल टू 90 न्यूटन्स प्लस ड्रैग फोर्स, 2 टाइम्स ड्रैग फोर्स। बाय 2 टाइम्स ड्रैग फोर्स, एक इधर से भी ड्रैग फोर्स लगेगा और एक इस साइड से भी ड्रैग फोर्स लगेगा, तो हमें सिर्फ क्या निकालना रह रहा है, ड्रैग फोर्स। अब ध्यान से देखो, ड्रैग फोर्स का कैलकुलेशन इज वेरी इजी, ड्रैग फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। जब भी लिक्विड होता है तब हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स, और अगर सॉलिड होता तो वी वुड हैव कॉल्ड इट व्हाट, तब उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, वेलोसिटी प्रोफाइल इस तरीके से जा रहा है, वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी होगी इसकी, दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल जो हम अज्यूम कर रहे हैं, ओके, वेलोसिटी एट दिस एंड इज 0.15 मीटर पर सेकेंड, इस एंड पे वेलोसिटी कितनी है, 0.15 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0, दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग, ठीक है। वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे अब टाउ कितना आएगा, टाउ इक्वल टू म्यू du अपॉन dy, करेक्ट, म्यू किसके बराबर है, दैट इज 3 du अपॉन dy, du यानी ये स्पेस, दिस स्पेस, ओके, ये स्पेस किसके बराबर होगा, दिस स्पेस इज 9 mm, this space is 9 mm, and what is the velocity here, du basically क्या है, 0.15 minus 0, so it is 0.15, but ये मीटर पर सेकेंड, मीटर में है, तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, let's just convert it into, इसको हम लोग इसमें ना कन्वर्ट करके 0.15 minus 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 9 mm है,
तो लेट मी जस्ट टेक इट 9 into 10 to power -3 meters, ताकि हमारे पास में shear stress आ जाएगा in Newton per meter square. So this will come out to be 50 Newton per meter square. 50 Newton per meter square. ठीक है, अब देखो ये आ गया टाउ 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एरिया कौन सा लेंगे? अगर ये प्लेट इस तरीके से कुछ रखी हुई ऐसे, तो इसका ये वाला जो साइड है, दिस विल बी द एरिया जिस पे फोर्स लग रहा है. तो ये एरिया किसके बराबर है? 1.25 into 1.25. तो ये कितना आएगा? This will come out to be 78.125 न्यूटन. 78.125 न्यूटन. अब इसके अंदर रख दो सारी चीजें. 90 plus 2 into 78.125. This is 246.25 newtons. 246.25 newtons. Yes, good. 246.25 newtons. This is the force required. Force required to move the plate in the upward direction. To move the plate in the upward direction. Okay. So this was, I guess, average तरीके का question है. The question is from fluid mechanics. Fluid mechanics से question है और 2 marks के लिए. 2 marks के लिए. ठीक है, चलिए. So this is it for today, guys. And let me tell you, अगर आप prepare ही कर रहे हैं, so please come on this coming Monday. On this coming Monday at 2 p.m. we'll be having a session. Let me just. Okay. We'll be having session for the civil engineering, complete soil mechanics करने वाले हैं. Marathon session रहेगा. The questions will be provided to you in advance. वेबसाइट पे विजिट करके क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपके पास में क्वेश्चंस रहें. एंड देन यू जस्ट कम, सिट देयर एंड सी द सॉल्यूशन और खुद को भी साथ में सॉल्व करते हैं. सो दिस विल रियली हेल्प. मंडे at 2 p.m. soil mechanics going to be the complete marathon session, and please download questions in the form of PDF from www.yourpedia.in. यहां से एक बार सारे के सारे जो आपके पेपर्स हैं उसको डाउनलोड कर लें. Yes, we'll be planning other subjects also. Okay, we'll be planning other subjects also. So till now plan ये है जो आपको मैंने बताया है अभी ये. Okay, so on this coming Monday, the date is 24th of January 2022 at 2 p.m. Okay. Chaliye, so we'll meet over there. Till then, everyone take care. Bye bye and keep studying.